Hello. 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 आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो. Yes, sir. Okay. So today's lecture is on citation and reference software, and ये lecture जो लेंगे डॉक्टर मुजाहिद सर. ओके, तो डायरेक्ट सर स्टार्ट कर देंगे अभी. ओके. Okay, sir. Good afternoon, everybody. Am I audible? Yes, sir. Good afternoon, sir. Okay. So this is the reference manager application program which we are going to learn today. All of you are doing PhD, and definitely you are required to write papers also, and finally you'll be writing your PhD thesis, right? So when we are writing research paper or review article or PhD thesis, then what we do is we type the text with citations, right? We do not talk with our own mind. We are citing other people who have worked in this area of our interest. So this is a particularly, typically a paper looks like research paper. It has got introduction part, preamble, and there is a text which is running. And finally, you see here 1 to 5. So these are the citations which have been quoted here. So the authors are mentioning the background with reference to other papers. So what we are doing, we are putting references 1 to 5, and then the text further goes and progresses and reaches a point where again another reference is added and the sequence is maintained, right? The first reference was 1 to 5, and then second one is coming as 6, and after that it is falling as 7. So there is a particular order in which the references are appearing in our text. And at the end of research paper, what you see is the list of references, which I have highlighted in red. So 1, 2, 3, 4, all these references are there. Typically, a review paper is containing almost 150 to 200 references. It can be more or less. This is an average number for a review article, which is big enough to cover all the areas of a given topic. And when we are writing a research article based on experiments and all, then mostly it is less than 100. This is how basically we are supposed to cite other papers when we are writing the review article, or we are writing a research paper, or when we are writing a PhD chapter, thesis chapter. So basically, this is a very important and typical part. What we are supposed to do is use a reference, and then we are supposed to use a particular style which is expected from us. I will just mute myself for a while because the fan is very high speed. I will just slow it down and come back to you. Please wait. Okay. So basically, you might have seen various research articles. Here I am citing 3 examples. The first one is American Chemical Society's Medicinal Chemistry Letters. The second one is Future Medicinal Chemistry. The third one is Medicinal Chemistry Research. And all these journals have different styles of mentioning the citations. So here for ACS Medicinal Chemistry Letter, what you see that author name is appearing with a comma and a dot, like Hisakata R dot, Nishida comma S dot, and others. And then their title is mentioned,
After the title ends, the name of the journal is mentioned, current biology, and it is mentioned in italics, right? After that, what is following is the year of publication, 2016. Then here we have the volume and issue, and the page numbers are there, and DOI link is given. So this is the style of ACS medicinal chemistry letter. But in another journal, if you see future medicinal chemistry, then you will notice that in the name itself, Hisakata was followed by comma, but here there is no comma, right? R was followed by dot, but in the second case, there is no dot. I hope you are able to notice these changes. Can you note them? Yes, sir. Okay. Then if you see the title of the journal, paper, and adaptable matrix shapes and all that, then current biology, same. And basically, other way of citation is given here. Like year of that publication 2016 is now mentioned at the end, as you can see. I hope you can notice that here it is the year of publication in future medicinal chemistry, right? And when you go to other paper, again the style will change. And what you see that here in the third one, the year is mentioned directly after the name of the authors, right? And then after that, the title of the paper is given and the name of the journal is given. So like that, these are the three different styles where we have used for a given particular citation. So basically, let us assume that first you wrote your paper, you wanted to submit it to medicinal chemistry letter, that is the first journal. You wrote it completely and then you submitted it. And unfortunately, let us say, they have rejected the paper. Then what you will do, you will change your paper format as per the second, let us say second journal, future medicinal chemistry. And then you have to change all the styles, right? Like you have to remove comma, you have to remove dot, then you have to shift the year from 2016 here, 2016, which is before the volume, and put it at the end for the another paper, right? So basically what is happening, that a lot of manual work is needed. But fortunately, nowadays we have softwares and application programs which can do this work for us very easily. With few clicks, you can change the style. You can shift from one journal style to another journal style, and your job becomes very easy. So this is very important application of this kind of reference manager softwares. I hope you are getting the point. And we will see how we are able to do this exercise in the coming slides. Am I clear up to this point? Yes, sir. Okay. So there are few applications. The number one is well known, is Mendeley. The second one is Zotero, which we are going to look into today. EndNote, then CiteAvi, then PaperPile, and few other examples are there. All these are the application programs which are helping us to insert citations, prepare the list of references with few clicks, and then if needed, we can change the citation styles. Okay. So we will look into Zotero, how to install it. First, we'll see that, and then how to work with that Zotero application. We will see that also. Okay. So you go to Google, search, and then you are using Zotero download. The first link which is appearing, Zotero, you are supposed to use that. Okay. Are you writing also? Are you taking notes? Yes, sir. Okay. So if you need me to slow down or stop at some point, do let me know so that I can stop and you can write it completely. Okay. तो इंटरनेट में जाना है, क्या करना है, Zotero डाउनलोड करने के लिए Zotero डाउनलोड टाइप करना है. Okay. And then you click on the link and you will lead to another page. And on this page, you will find two things which can be downloaded and installed.
The number one is Zotero 7 for Windows. This is the first main program which we are supposed to install. And the second one is an additional connector which is linked with the web page we are using. Okay. So these are the two things which we need to download and install. The main program is Zotero 7, and this is the additional internet web page connector which we are supposed to add. तो ये जो आपका इंटरनेट का पेज होता है उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा, तो आप उसको वहां से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. That is install edge connector. Fine. Is that clear? Two things are needed to be downloaded and installed. Fine. So you are clicking on download, then download will appear. So when I'm clicking on download, download will start and it will show here in the downloads. Then you go to the folder in which you have downloaded. I have downloaded in the downloads, and then Zotero is appearing here. I will double click it, start it, and I will start the installation. So you click on next. So double click Zotero application, execution program, setup program, start it. First window will appear. You will click on next. Then it will ask for standard or custom. It is easy to work with the standard. So all the most common options are installed there. So choose standard and then click on next. So choose standard and click on next. Then installation will, window will appear. You click on install and the installation will proceed. Once the installation is over, you install the other part also. Install the Zotero connector for Edge. If you are using Chrome, then it is recommended that you upgrade your Chrome to Edge and use Edge for your desktop or laptop. And then you install that also. And this will be added into your web browser. Once the installation is completed, then it will appear somewhere here like this. You can see here, the right hand top corner, I am showing the pointer. Are you able to note it? So a small icon will be appearing here on your web page. So this is your internet page. Once you install the Zotero connector, so a new icon will appear on your internet browser. So these are the two things which we have done as far as the installation is needed. Am I clear up to this point? Yes, sir. If you want to revisit the previous slides, you can ask me to go if anything is not clear. I guess everything is clear. Yes? Yes, sir. Okay. Now Zotero is installed in your computer. So you double click and start Zotero. This is the main page of Zotero, which will appear like this. It will have few options like file, edit, view, tools, helps, and my library. Okay. On this my library, above this my library, you will see a folder with a plus sign. Okay. Let us say we are working on different topics. I'm working on, let us say, tetrazoles. You are working on oxazoles. Somebody else is working on some other natural product, right? So we are supposed to make folders as per our topic of interest so that we can collect the references in this folder. So this is the folder with a plus sign. So you will click on that. A new box will appear, that is new collection. So I'm going to collect my references in this folder. So new collection is there. I want to name it as tetrazole, let us say. And after typing the name, you will click on the create collection button. So what we are doing here, I want to collect certain research papers, certain references. I want to create a database on my particular topic, right? And for that, what I'm doing is making a folder for that.
So in Zotero, I opened Zotero. I clicked on the folder, a plus sign, which is above my library. A box will come for giving the name. So you give the name and then you click on create collection. Okay. So I am putting, let us say, tetrazole name here, and then I will click on create collection. Once I do that, you can see now that below my library, a new folder is appearing. And the folder is named as tetrazole. Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ये पार्ट रिपीट करना है? No, sir. No. Okay. No, sir. That's Fine. एक बार ये फोल्डर आपका रेडी हो गया टेट्राजोल नाम का, राइट? आप उसको क्लिक करोगे, ओपन, वो सिलेक्टेड ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये जो मिडिल पैनल है, मिडिल पेन बोलते हैं उसको, इसके अंदर कोई पेपर नहीं है यहाँ पर, राइट? देयर इज नो पेपर इन द मिडिल पेन. Once you are adding the data here, then it will be filling up with the various research papers. Okay. So I have to bring the research papers here, and the folder name is tetrazole. So obviously, like I am interested in tetrazole topic. So we should be going to Science Direct. And important thing is that you should have a login in there. Login is free. You can create account in Science Direct. So you have visited to the page, you have logged in, and then you are typing a particular search term. In this case, it is tetrazole derivatives. Okay. Once I'm clicking on tetrazole derivatives, these many results are appearing, which you can see on the left-hand corner, 11,242. And if you search today, it will be more than 12,000. Okay. Now, below that, you can see that years are there. So there are options for us to refine the search. Like I want the latest papers, that I can select the year or the period from which I want to select my papers. So what I'm doing here is I am selecting 2025, 24, and 23. Only last 3 years, let us say. Okay. And below that, a few more filters are there, like article types. So review articles are there, research articles are there. Their numbers are mentioned in the brackets, right? And few more filters are available if you scroll down the page. Fine. So once you are scrolling down further, I am selecting it. So if you see that these boxes are unchecked right now, then I'm clicking them and selecting them. So these boxes now will become orange. So they are selected. Okay. Then I go further down. Once I'm selecting it, the number is changing, right? Like 1,310. So I will go to the previous slide. I will bring your notice to this particular fact that the total number was 11,242. These are the total hits which we are getting after searching for tetrazole derivatives. But I'm limiting my search to the last 3 years, or the latest 3 years, 25, 24, and 23. And some of you might be getting confused with 2025. It is right now not here. 2025 to abhi aaya bhi nahi. But the papers have been accepted, and when they are going to be published, they will be published in 2025. Fine. But online version is available right now. And that is why we see 2025 also. So we are selecting it, then further scrolling down the refined part. And here we have few more options to select from. And I am basically focusing upon access type, open access, and open archives. Okay. So what will happen that I will be able to see those papers which can be downloaded and read completely, like their full text is available freely. Is that clear? Okay. Once these options are selected, then what you are going to do is export the citations. So here we have that option to select from is download selected article. So this box you are selecting. Okay.
and then you will click on export. Is that clear? And these boxes will appear only when you are logged in. आपका लॉगिन रहेगा तो आपको ये दिखाई देगा, सिलेक्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शंस दिखाई देंगे. अगर आप साइंस डायरेक्ट को डायरेक्टली सर्च करते हो, सर्फ करते हो, तो सर्फिंग कर पाओगे आप, मगर ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा एक्सपोर्ट करने का साइटेशंस को. तो आपको लॉगिन करना जरूरी है इन द साइंस डायरेक्ट. ठीक है, फाइन. सो वी आर सिलेक्टिंग. सो आई हैव क्लिक द चेक बॉक्स. नाउ दीज आर्टिकल्स आर सिलेक्टेड. ओके, and number is showing download 100 articles or export articles. Okay, so I am choosing to export the articles. Okay, once I am selecting on export, it will give me the options to select from. So 100 citations or 100 papers have been selected, and they are asking us to save to reference work or export citation to RIS or export citation to BibTeX. We can choose either RIS or BibTeX. These two are accepted by Zotero. Okay, so these are the two options which we can select from. Okay, and we can download it. So once you are clicking the export citation to BibTeX, download will start and it will go to the download folder. Okay. So here I am opening the download option from the 3 dots of our Explorer and visiting to the download part. Here I can see those files which have been downloaded. Science Direct Citations and .bib. If you are choosing RIS, then it will be showing as .ris. Is that clear? So now citations have come to our computer. So what we did, we went to Science Direct, we selected papers, and what we did, we selected export option. Then we gave the format in which we want to download the citations, and the preferred way of downloading is BibTeX format. And then you go to the download folder, you will see that the file has been downloaded with extension .bib at the end. तो ये पार्ट हो गया हमारा. साइंस डायरेक्ट से हमने 100 साइटेशंस लेकर आ गए. ओके, जोटेरो हमने इंस्टॉल कर दिया है. जोटेरो में हमने एक फोल्डर बनाया था टेट्राजोल नाम का, इफ यू रिमेंबर, राइट. एंड नाउ वी हैव डाउनलोडेड 100 साइटेशंस. फाइन. नाउ वी गो बैक टू आवर जोटेरो window, and on the file you click and the option will open up, and there is an option which is import. Can you see that? Yes, sir. Okay. yes. तो क्या करेंगे आप, फाइल पे क्लिक करेंगे जोटेरो में जाकर. जोटेरो तो ओपन नहीं है, उसको आपने मिनिमाइज किया था. मिनिमाइज करके आप कहाँ गए, साइंस डायरेक्ट में, राइट. राइट. Yes. ओके. ओके, साइंस डायरेक्ट पे गए आपने, फिर वहां से एक पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के आप सर्च किया, आपने फिल्टर्स लगाए, कितने साल के पेपर्स चाहिए, ओपन वाले चाहिए, जो भी चाहिए आपने फिल्टर्स लगाए. शॉर्ट लिस्ट जो आपको दिखाई दे रहा था आपने सबको सिलेक्ट किया. यहाँ पर ये सिलेक्ट किया सबको, चेक बॉक्स पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर दिया साइटेशन. आपके पास फाइल आ गई है. अभी आप गए हैं जोटेरो पर, फाइल पे क्लिक करोगे और इंपोर्ट पे क्लिक करोगे. इंपोर्ट के क्लिक करने के बाद वो आपको पूछेगा जो ऑप्शंस हैं. तो आपने देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर आई विल ट्राई टू एक्सपांड इट फर्दर, आई होप इट इज विजिबल टू यू दैट दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे. तो अ फाइल विच वन बिबटेक्स फॉर्मेट में और RIS फॉर्मेट में. तो ये दोनों फॉर्मेट वो एक्सेप्ट कर लेगा. ओके, फाइन. तो हमने फाइल ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, हमने सिर्फ ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि हम कौन सा ले रहे हैं. ओके, और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. तो ये पहला जो ऑप्शन है वो चूज किया, वेयर डू यू वांट टू इंपोर्ट फ्रॉम. वी वांट टू इंपोर्ट फ्रॉम BibTeX फाइल. वी विल सिलेक्ट दैट ऑप्शन एंड वी विल गो टू नेक्स्ट. वंस यू आर गोइंग टू नेक्स्ट एंड डिफाइन द फोल्डर में आपका जो फाइल आपने डाउनलोड किया है, यहाँ पे दो हैं, मैं इसमें से एक चूज करूंगा. उस पर आपको क्लिक करना है
और ओपन करना है। तो यू विल सिलेक्ट इट एंड ओपन इट। एक बार ओपन क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो दिखाई देगा फिर से। ओके फाइन। अभी यहाँ साइड पैनल में देखेंगे माई लाइब्रेरी, बिलो दैट माई लाइब्रेरी टेट्राजोल फोल्डर इज सिलेक्टेड। कैन यू सी दैट इट इज हाईलाइटेड, अ बिट हाईलाइटेड? Yes, sir. ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है प्लेस्ड इंपोर्टेड कलेक्शन एंड आइटम इनटू न्यू कलेक्शन। तो ये नए फोल्डर में चला जाएगा। तो मुझे ये जो टिक है इसको निकालना है, बिकॉज आई वॉन्ट माई साइटेशन टू बी इम्पोर्टेड इन टेट्राजोल and I have already made a folder there. So I don't want in the new collection. I want these citations to go into which collection? Tetrazole collection, because I have named the folder, right? Okay. So you have to uncheck it. तो ये जो आपका tick mark है, place imported collection and items into new collection, इसको आपने uncheck करना है। Uncheck करने के बाद copy file to Zotero storage folder. This option is already selected. You have to click next, and once you are clicking next, a flash window will come. We will tell you that 100 items were imported, and you can see the list here in the middle panel. आपको दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में? Yes, sir. Okay, so ये एक क्लिक के ऊपर पूरे के पूरे वो 100 पेपर जो आपने साइंस डायरेक्ट से चूज किए थे उसके साइटेशंस यहाँ पर आ गए, and then you click finish and you have this. How many items are there in the view? Can you read it? 100 items. Items in 100 items. yeah. तो आपके पूरे 100 पेपर्स जो आपने सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पर आ गए। आपने सर्च क्या किया था? टेट्राजोल डेरिवेटिव्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी पेपर्स होंगे वो सब यहाँ पर मिडिल पैनल में आपको दिखाई देंगे। क्लियर हुआ? ओके। अब बेसिकली आप इसमें कहीं भी क्लिक करोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा ब्लू से, जैसे मैंने पहले पर क्लिक कर दिया तो ये ब्लू है, ये सिलेक्टेड हो गया। मतलब अब जब आप इसे क्लिक करोगे, फर्क है दोनों में, दोनों विंडोज में। आपको देखिए मिडिल पैनल में जो है ये सब पेपर का लिस्ट है, और आपका जो राइट पैनल है वो एम्प्टी है। उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट दिख रहा है 100 आइटम्स इन दिस व्यू, राइट। जब मैं फर्स्ट पेपर पे, इस लिस्ट के मिडिल पैनल के फर्स्ट पेपर पे क्लिक करता हूँ तो वो हाईलाइट होगा, और ये राइट पैनल में वो आपको डेटा देगा उसका। सो इट इज शोइंग यू द टाइटल ऑफ द पेपर, द टाइप ऑफ द पेपर इज जर्नल आर्टिकल, इट इज द टाइटल, ऑथर्स आर गिवन, पब्लिकेशन यूरोपियन जर्नल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री में ये पब्लिश हुआ, वॉल्यूम 256, पेजेस, डेट 2023, एंड ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल हियर. So you keep clicking on various titles and you will be able to see the details of the paper on the right panel. Okay. Now we go further. Basically, I was trying to take those references which had open access. If you remember what I did, I selected 3 years, 2025, 24 and 23. I scrolled further and I checked one more box which was open access, right? So now what I want, that all these 100 papers which I have taken from the Science Direct, I want their PDF also if possible. So I want the software to download the PDFs automatically. Okay, so it will be able to download the PDF of the first paper or the 5th paper if it is available online easily. It is going to search for it. It is going to download for us. Are you getting the point? So that is another amazing feature, that we can download all the PDFs which are available easily. Okay. So what we do, middle panel is already selected here. You just type Control A. क्या लिखना है आपको? कीबोर्ड से क्या करना है? Control A सिलेक्ट करना है. Control button and yes. Are you getting the point? Yes. Control A for select all paper. Control A किस लिए करते हैं आप? To select all paper. हाँ, सिलेक्ट ऑल पेपर्स के वास्ते. तो मिडिल पैनल में आपने कंट्रोल ए टाइप किया तो वो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसा. ठीक है. राइट नाउ सी ओनली वन पेपर इज ब्लू, एंड व्हेन यू प्रेस कंट्रोल ए, ऑल द लिस्ट, all the papers in the list will be selected. Okay.
and then you right click it. On right click, you will be getting a panel, and on the panel, the first option is find full text. Can you see this? Yes, sir. Someone is talking in the background. Please mute yourself. Okay. So आपने क्या करना है? Yes. फर्स्ट ऑप्शन जो है फाइंड फुल टेक्स्ट का, उस पर क्लिक करना है. तो फर्स्ट व्हाट यू डिड, मिडिल पैनल में कर्सर रख के या क्लिक करके आपने कंट्रोल ए दबाया. All the papers got selected, all the titles got selected. Then you right clicked and you are getting a flash box open. On this flash box, the first option you are choosing, find full text. And then you will see that it is searching for it. So for the first paper, it is showing the cross mark. So it could not find the full text for the first paper. Okay. And the progress bar is there. So this progress bar will continue. The software will check for all those 100 titles and it will keep progressing further. So I am showing you how it is going further. So some papers are crossed, some papers are ticked green. So the software has completely and successfully downloaded the full text in the PDF format. Can you see the differences? No file found, and here's the cross mark, and then full text is available and the tick mark. And it will go further, keep checking everything. So download will continue, and this progress of the green bar is depending upon the internet speed your computer has. So accordingly, this will get completed sooner or later. So what is happening here on this slide? The program is trying to find all the PDFs which are available, full text PDFs, and it is downloading it. Okay? यहाँ तक के क्लियर है? Yes, sir. Clear. ओके. सो ये फर्दर होता रहेगा, प्रिंट ये चलता रहेगा आपका डाउनलोड, प्रोग्रेस बार धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. फाइन. एंड वंस the paper has been downloaded, then you will see the difference of the title. आप ये जो पार्ट है इस पे ध्यान दो आप. You will see that the title which is available with PDF is having a greater than sign. आपको दिख रहा है यहाँ पर एक? Yes, And sir. here there is no greater than sign. So ये जो बुलेट टाइप का दिया हुआ है ना, ये ग्रेटर देन साइन का बुलेट, इसका मतलब ये है कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है. आर गेटिंग द पॉइंट? मतलब पीडीएफ डाउनलोड हो गया. द पीडीएफ हैज बीन डाउनलोडेड इन योर प्रोग्राम. सो दिस ब्लू वन हाइलाइटेड हैज गॉट दिस बुलेट ग्रेटर देन का साइन. सो इतना मतलब है इसका पीडीएफ आपके पास आ गया है. ओके. सो अगर आप उसको क्लिक करोगे, तो जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखो पीडीएफ दिख रहा है. दिख रहा है आपको यहाँ राइट पे, राइट पैनल में? Yes, sir. हाँ. तो ये राइट पैनल में यहाँ पर आपको पीडीएफ का फर्स्ट पेज दिख रहा है, राइट? एंड इफ यू आर क्लिकिंग दिस फर्स्ट पेज विच इज अवेलेबल हियर, then you can open the complete paper from here itself. The paper will open in Zotero itself. Okay? So I am clicking on this paper, let us say, and what I will be able to see is that download is continuing, and at the same time I can see the PDF which we have downloaded. So this paper is available. How many pages are showing? One of 5. So it means all the 5 pages are available for this paper. If you scroll, you will be able to see it. So you don't have to click and save and give the name for each and every PDF. We usually do that, right? The software is directly connecting it, downloading it for us, and on one click we can open. So you are going on the title. When the title is blue, and if the title has the paper available attached to it, it will be shown on the right panel. And on this right panel, if you are clicking, you will go to the actual PDF. But do remember that this PDF is not open in Adobe. It is still opened in what? You can see the sign Z, Zotero. तो Zotero में ही वो ओपन हो जाएगा.
तो आपको स्विच ओवर करना आसान है उसके अंदर। अभी मैंने लेटर से मुझे वापस जाना है, तो आई कैन सी द फोल्डर नेम हियर, टेट्राजोल। आर यू ऑल्सो एबल टू सी टेट्राजोल? Yes, sir. Okay. can So if you want to go back, you just click on tetrazole and we will go to our main Zotero page. So just click on a title, go to the PDF and then click back and you are back to the Zotero. Are you getting it? तो पेपर में से आपको कुछ वैल्यूज लेनी है, लेट अस से IC50 वैल्यूज हैं, ओके, और सम NMR data is there or any other data which you need from the paper to be included in your writing. Then you can scroll the paper, you can select that part, right, and paste in your Word file and then go back to your Zotero again. Okay, so this is the managing the titles and managing the PDFs. Up to this point, are we clear? Yes, sir. Okay. Yes. Fine. So you can see that progress bar is continuing and it is reaching up to this part and it is mentioning that 54 files have been added. Though I chose to import 100 files, but Zotero could find only 54 PDFs, which are easily available for Zotero to be downloaded in our database. So now we have 100 titles, but 54 of the titles have attached complete papers as well. And we are just getting with the right click and check for find the full paper. That was the option, right? If you remember, we selected all, right clicked, and what we said, find full text. सिर्फ एक क्लिक करने के बाद वो अपने आप पूरा काम कर रहा है आपके लिए और पेपर्स आपको लाके कंप्लीट दे रहा है। यहां तक के क्लियर है? So now we go to the Word file. When we are installing Zotero, then in our Word file or MS Word application, we will get a new menu which is named as Zotero. तो ये Zotero का मेनू आ जाएगा. These are the usual menus of file and home, insert, draw. These are the inbuilt menus of Word, right? Isn't it? MS Word. Zotero is the new menu which we will be able to see. Okay. And आप जब इस पे क्लिक करोगे, ये क्लिक टू गो बैक नहीं है, ये क्लिक के लिए जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको एक वर्ड के अंदर, या यू कैन सी ये वर्ड का फाइल चालू है, राइट? वर्ड के अंदर ही आपको अब Zotero ये हाईलाइट हो गया है, राइट? उस पर क्लिक किया था आपने, अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब ये ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन है ऐड और एडिट साइटेशन। तो आपको जब रेफरेंस ऐड करना है तो आप Zotero के जो टाइटल्स आपने सेव किए हैं वो यहाँ पर आप साइटेशन दे सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस एट द एंड ऑफ पेपर, जो लिस्ट होती है जिसको आप बोलते हैं बिब्लियोग्राफी भी, राइट? एंड फ्यू अदर ऑप्शंस आर गिवन. वी विल सी वन और टू ऑफ देम as the talk progresses further. Okay. So the idea is to type certain text. We will write some text that like tetrazole are heterocycles. Tetrazoles are heterocyclic compound. We are typing this. And then we want some reference here, like 1 and 2, 2. Then we put some other sentence and then 3 to 4. So we add these references with the help of this toolbar. Are you getting the point? Yes. Okay. So let us go to the part in which we are going to add certain citations in our paper or the write-up which we are writing. Okay. So let us say you are writing a paper and it is titled as selective synthesis of tetrazole. Here your names are there and the other details which usually there, right? Fine. And introduction we have written, tetrazoles are a class of 5-membered heterocycle. And this arrow is showing that at the end of this sentence, I want to put my references. Okay. Obviously, this sentence I have not written from my mind. I am reading papers, and those papers which are available in my Zotero app, those papers I have read.
And from reading those papers, let us say I got these two sentences which are meaningful and accurate also. Okay. So I want to cite here the paper from which I have read this fact. This is a fact, right? Tetrazole are a class of 5-membered heterocyclic compounds that contain 4 nitrogen atoms and 1 carbon atom in their ring structure. We know that tetrazoles are like this, but we are not saying it from our mind. The basic idea of writing up this paper is you always cite the things, right? So citations are important. And that is why usually review articles, especially, they have more than 200 citations. So people do know the things. You will say that मुझे मालूम है टेट्राजोल तो 5-membered rings है, ठीक है, और उनके अंदर 4 नाइट्रोजन होता है, तो मुझे साइटेशन देने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं होता है, आपको साइटेशन देना होता है, ठीक है. ओके, तो बेसिकली एट दिस एंड ऑफ द सेंटेंस आई वांट टू इंसर्ट citation. So I will, let us say, going to my Zotero page, and these are the 2 papers, let us say, which I read, and in context of these 2 papers, I wrote this paragraph or this first sentence. Are you getting the point? I am repeating myself. Zotero के ये 2 पेपर मैंने पढ़े, ठीक है, और मैंने सोचा कि ठीक है, इसमें मेंशन किया हुआ है. क्या मेंशन किया है? कि tetrazoles are 5-membered rings with 4 nitrogen, 1 carbon. Both these 2 papers are mentioning this fact. Okay, so what I will do, I want to insert these 2 papers after the first sentence in my article. Am I clear at this point? Yes, sir. तो क्या Yes, करना है? ये सेंटेंस हमने लिखा है, मगर कहाँ से लिखा है? हमको वो 2 पेपर डालना है, और वो 2 पेपर लेटर से ये है जो मैंने सिलेक्ट किए हुए. ओके ओके फाइन. तो आपने ये 2 हाईलाइट कर दिए. ओके, और आपकी वर्ड फाइल में आपने इंसर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? यू विल गो टू Zotero क्लिक करके आपने फर्स्ट ऑप्शन जो है ऐड और एडिट साइटेशन, इस पर क्लिक करना है. वंस यू आर क्लिकिंग इट, आपको एक नया ये बॉक्स मिलेगा, ये वाला, ये रेड वाला दिख रहा है ना आपको, ये बॉक्स मिलेगा. ओके, और आपने जो 2 पेपर सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पर आपको लिस्ट में दिखाई देंगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई विल गो बैक टू द प्रीवियस विंडो. देखिए, मैंने जो पेपर टाइटल सिलेक्ट किया उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अ सॉल्वेंट फ्री मैकेनो केमिकल, और दूसरा है अमाइड बायो आइसो steric replacement. A solvent free and amide bio. You go back to your Word file and see that these 2 are appearing here. A solvent free and amide bio. Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. This is in our Word file. और ये कैसे दिख रहा है हमको? We clicked on Zotero. Zotero पर क्लिक करके जो टूल बार आई है, उसमें से पहला जो ऑप्शन था एड साइटेशन, वो क्लिक किया तो आपको ये बॉक्स मिलेगा. ओके, आई विल इरेज इट टू मेक इट मोर क्लियर. ओके, फाइन फाइन. Now these are the 2 citations which I want to insert at the end of my first sentence. So I will click on this. Once I am clicking, then after clicking, what will happen, that this space here after the Z, that's capital Z, this space will have that citation coming here. Okay, so it is coming Saha et al. Okay, and from the list it has gone. I am showing you again. See that a solvent free mechanochemical. On this paper I am clicking by mouse, a solvent free. So that solvent free part is not there in the list, and now author name is showing here. It means that title has been added into the box. Okay, now I will click on the second reference, amide bio. So you are supposed to click on the with the help of mouse, and then once you are clicking it, you will get now another paper here. So you can see that 2 papers are there. Okay, and after that these 2 are appearing here. So now there is an arrow here. On this arrow you are clicking, and once you are clicking, then this box will go away
and reference will be added in your text. So I'm clicking on it, let us say, and now you will see that 1 and 2 superscripts have appeared. Are you getting the point? Yes, sir. ओके तो आपका रनिंग टेक्स्ट में बीच में आपको रेफरेंसेस ऐड करना है, और वो रेफरेंसेस जो ऐड करना है आपको, वो आप कैसे ऐड करोगे? द टेक्स्ट इज रिटन, whatever you are writing is in contact with certain paper, right? And those papers you have read from your database. So what you do, you chose those two papers or 3 or 4 papers, it may be 4 or 5 papers together, right? You select them by pressing control and clicking the various titles. मुझे अगर इसको और क्लिक करना है थर्ड वाले को, तो मैं कंट्रोल दबा के रखूंगा और माउस से क्लिक कर दूंगा, तो ये वाला एक और ब्लू हो जाएगा. तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया. सिलेक्ट करने के बाद मैं वर्ड में जाऊंगा. वर्ड में मैं जोटेरो जो ये है पैनल, उसको क्लिक करूंगा. मुझे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड और क्लिक करने का. उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बॉक्स दिखेगा. बॉक्स में आपके वो पेपर दिखेंगे जो आपने सिलेक्ट किए हैं. उस पर 1 बाय 1 आप क्लिक करते जाओ और उनको ऐड कर दो बॉक्स के अंदर. तो ये 2 टाइटल ऐड हो गए क्योंकि आपने 2 चूज किए थे. उसके बाद आप एंटर करोगे यहाँ पर क्लिक करके और वो पहुंच जाएगा आपके टेक्स्ट में. The citations are inserted in the text and appear as 1, 2. Is that clear? Now let Yes, us sir. say ये जो सेकंड सेंटेंस है, they have general formula, this is sand characterized by so and so with which are unique arrangement of nitrogen and carbon atom, and here again I want to add few more references. So this sentence obviously I have taken from certain papers, so I will go back to my Zotero and I am selecting 4 more citations. So these are the 4 papers, let us say I am using to write that sentence. Okay? So middle pane में आपने ये जो 4 है इसको आपने सिलेक्ट कर लिया. यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है कि कैसे सिलेक्ट करना है. You press control key, right? And keep clicking on the references which you want to select. And then go to the Word document. So these 4 we have selected and we want to insert these 4 in our Word document. So we are going back to Word document. And then you will click on add or edit citation first. Once you are clicking here, then you will be getting this insert box, and then you will see 4 titles appearing here. 1 which is selected, this is the second, this is the third, and this is the 4th, right? You can select all 4 together by pressing down key and shifting and pressing shift key. So you press shift and press down and all 4 can be selected together. Once they are selected, click on them, they will get inserted here. कहाँ पर आ जाएंगे? आपके insert box में. And they will disappear from the list. So ये जो list है आपका दिख रहा है, आप जब insert कर दोगे तो ये list चला जाएगा. It will go back. ये निकल जाएगा और ये कहाँ पर ऐड हो जाएगा? यहाँ पर ऐड हो जाएगा. तो आपने चारों एक साथ सिलेक्ट किया, क्लिक किया, तो यहाँ पर वो 4 दिखाई देंगे आपको. आप देखोगे कि इनके बीच में सेपरेशन लाइन है यहाँ. तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन, राइट? एंड दिस, डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस एरो फॉर फाइनल इंसर्शन. वंस यू इंसर्ट इट, यहाँ पे साइटेशन आने वाला है. कहाँ पर? यहाँ पर हमने ऐड किया था 1 और 2. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यहाँ पर जो नंबर आएगा वो रहेगा 3 2. यस, 3 to 6. Very nice. So we are clicking it, and what you will see here now that it has got 3 to 6. So now we added 6 references in total with this particular small paragraph. Are we clear at this point? Up to this point? Yes, sir. Yes. Okay, fine. So selection of the title is important before the insertion. Once you are selecting it here in the middle panel, then only it will appear in the list. If आप बगैर select किए, इसमें से कोई आपने highlight नहीं किया है,
और डायरेक्टली आप जाओगे तो इंसर्शन के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा कुछ इंसर्ट करने के लिए. So what you have to do is select those titles which you want to cite and then highlight them with your mouse click and then go to Word, then click on Add Citation. Then box will appear with the list of the citations which you have chosen in Zotero, and all those chosen papers are here. You again select them to bring them into the insert box. So select them and click on them. They will be added in the insert box. And then finally click on the arrow for the final insertion. And they will appear as 3 to 6. Hope the things are not very complicated up to this point. Okay. So this is how we are able to insert the citations. Fine. Now, if you scroll down, we added citation from 3 to 6, and this is the second paragraph. And what we want is a list finally. Let us say this is the end of the year paper. आपने पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है और लेट अस से आपके 112 साइटेशंस हो गए. ठीक है, यहाँ पे कितना है? 112 is the last. Let us assume that it is the final number, right? But we don't have the list, or that is the list of references or the bibliography here. So there is the second button here in the Zotero panel, add or edit bibliography. So once you are clicking on it, then all these papers which you have cited in your text should be appearing as the list as 1, 2, and 3. And if you have added 112 citations, 112 papers list will be appearing below with one click. So let us see. Once it is there, you are clicking it. So what I'm doing is I'm typing a word references, and I want my references to come below this. So cursor is here, right? If अगर आपका cursor यहाँ रहेगा और आपने insert पे click कर दिया तो यहाँ पे references यहाँ पे आ जाएंगे, right? We don't want that. We want it at the end. So once our paper is complete or the chapter is complete, we type references, and below that we put the cursor, and then you are clicking on bibliography. That is the second option available here. Okay, and ये वाला add edit bibliography. Once you are clicking it, then you can see that this is citation number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So I change the view, percentage view, so that we can see all the 6 papers which are coming just by a click. I hope you will be happy to see that बहुत ही आसानी से आपको ये मिल जाएगा. आपको टाइप नहीं करना है कि नेम ऑफ द ऑथर, आपने सब ऑथर्स के नाम टाइप कर दिए, फिर आपने पेपर का नाम टाइप किया, टाइटल, राइट, उसके बाद जर्नल का नाम, फिर उसका पेपर, उसका पेज, उसका ईयर, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा. आई होप यू आर एबल टू सी दैट, राइट. So it's the green chemistry 26, then page numbers are there, then 2024 year, and you can see that all the references which are coming have same style, right? So whatever the style has been chosen, in the same style it is coming. So this style right now which you see is the style of Nature, and नेचर जर्नल में जो पब्लिकेशन होते हैं उसमें ऐसा ही अपीयरेंस है. सो वो नेचर सिलेक्टेड था इसलिए वो ऐसा दिख रहा है. आपको जब दूसरा जर्नल चूज करेंगे तो ये बदल जाएगा इसका स्टाइल. यू नोट फ्यू थिंग्स हियर दैट these lines have a lot of spacing between them. Now what I will do afterwards, that I am going to change the style of the journal, and you will see that with one click, by just changing the name or choosing the name of another journal, will make the changes here in the list also. You see that the line spacing is more. That is the first thing, right? One more thing you can note here in the previous page. Just a sec. Here what I did, when I inserted citations, they were appearing as superscripts, 1, 2. Are you noting it? Yes, sir. Okay. In some journals, what happens that it is given in 1, 2 like this round brackets. In some journals, it is given as 1, 2 square brackets, right? ऐसे अलग-अलग होते हैं. So all these numbers are supposed to be changed if you are changing the name of the journal, right? And in references also,
what is happening in some journals, the year is mentioned at the end, or somewhere year is mentioned in the between, right? So all these things are supposed to be changed. तो ये मैनुअली नहीं करना होगा. अब क्या करना होगा, सिर्फ आपको स्टाइल का नाम चेंज करना है, जर्नल जो आपको सेंड करना है उसका नाम चूज करना है. ओके, एंड फॉर दैट जोटेरो में जो लास्ट वाला पार्ट है, डॉक्यूमेंट रेफरेंस प्रेफरेंसेस, इससे आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. ओके, so we will see that also. Now this style is nature style, so we are going to the document preference part. Document preference is very important utility tool to change the style of references. As we know, every journal has its own format of papers and citations. Okay, so what we can do now is look into the options which are available in the document preferences. So once I am clicking on it, you can see that nature is already highlighted. तो नेचर का ही यहाँ पे स्टाइल चल रहा था हमारे पे, हमने जो अभी साइट किया था. ओके, एंड आई वांट टू हैव अनदर वन. सो देयर आर ऑलरेडी फ्यू पेपर्स व्हिच आर visible in the list. Okay, but let us say you are not needing them and you need another journal which is not available here. So what you will do, you will click on manage style. तो आपको पहले कहाँ क्लिक करना है, document preferences. A box will appear. On that box you will click on manage styles and then click further, और आपको यहाँ पे ये लिस्ट दिखेगी, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन एंड ऑल, राइट. देन एक ऑप्शन यहाँ पर है, अगर आपका पेपर इसमें मिल जाता है तो आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है, राइट, स्टाइल चेंज हो जाएगा. अगर वो लिस्ट में नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट एडिशनल स्टाइल्स. आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक जर्नल मेरा यहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, ये लिस्ट में ना आपको 15 से 20 ही दिखाई देंगे, ठीक है, बट उसका जो रिपोजिटरी है, जो डेटाबेस है किसका, जोटेरो का, उसके अंदर बहुत सारे हैं, ठीक है, अराउंड more than 1000 let us say. So if I want some of them, then what I will do, I will first click on document preferences. ये पहला क्लिक था मेरा, बॉक्स आया, बॉक्स पे मैंने क्लिक किया मैनेज स्टाइल, ओके किया. आगे जाने के बाद गेट एडिशनल स्टाइल क्लिक किया, और उसके बाद जो पेज आएगा उसमें आप देखिए 10,000 स्टाइल फाउंड. 1000 was an understatement. Actually, it is not 1000 or more than 1000. It is more than 10,000 styles are available, right? And if you put some alphabets here, let us say medicinal chemistry or Journal of Medicinal Chemistry in the title search, then this list will reorganize itself as per the alphabetical order. As you can see that it is starting from some numbers, and then after that alphabet A is coming. So whatever the title you are typing here, the list will reorganize. So let us say we are typing medicinal word here. So once I'm typing medicinal word in the style search, then I can see medicinal, all these titles are available. Okay, and I want to, let us say, use future medicinal chemistry. This is the title of the journal. I want my references to change into the style of this journal from the style which I have in my text right now. I have told you that we have the style of nature. We want to transform that style into another style of a new journal. Future Medicinal Chemistry is the name of the journal. Okay, so what you will do, you will choose that style, Future Medicinal Chemistry. तो आपने ऐड कर दिया उसको, अब आपकी लिस्ट में आ जाएगा और आप उस पर क्लिक करोगे. Once you are clicking, and then once you are choosing it and then clicking on OK, then the style is supposed to change, right? So I'm choosing it from the list, and now you will see that the spacing between the line has decreased. I brought your attention to the fact that before the change of style, the lines were away from each other in the nature style, right?
there was spacing, lot of space was there. So now a new style has come without any spaces, right? And you see here the change of style in the citation. Earlier it was without any bracket, it was in the form of superscript. Now it is the regular text like, but within the square bracket, because it is the style of that journal which we have chosen, right? So this is the way the citation as well as the bibliography, both the things are changing by just choosing the name of the journal from the list. And if it is not available, you choose certain options like manage styles, then add styles, और उसके बाद आपका काम हो जाता है. So you are able to change the style. So I hope that you will find this software very useful when you are working on your PhD work, and you'll be able to utilize all the tools which are available, and hopefully it will decrease your quantum of work by almost 60 to 70% as far as the writing work is concerned. So if you have any queries, then the floor is open for the questions. You can ask if you have any doubts. Yes, please. कोई क्वेश्चन है? Sir, हाँ. sir, while downloading, we have to go for Zotero 7 for Windows or Zotero connector. Both the things are needed. कंप्यूटर में जो इंस्टॉलेशन होगा, जो कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन होगा ना, wait, I will show you one option here. Okay. See, Zotero कनेक्टर जो है ना, वो यहाँ पर दिख रहा है. ये देखो, मैं अभी ये लाइव पेज है आपका इंटरनेट का, साइंस डायरेक्ट का खुला हुआ है. यू कैन सी. ओके, तो ये साइंस डायरेक्ट का पेज है. लेट अस से मुझे इसमें से एक ये वाला आर्टिकल मुझे मेरे डेटाबेस में भेजना है, जो मैंने फोल्डर बनाया ना टेट्राजोल का. ओके, तो ये कनेक्टर जो है वो आपका वेब पेज में इंस्टॉल होता है. Zotero एक एप्लीकेशन है जो कहाँ पे इंस्टॉल होगा, ये Zotero है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो Zotero जो है वो मेन सॉफ्टवेयर है, राइट? तो Zotero इज अ मस्ट. वो तो बहुत ही जरूरी है. उसके अंदर ही सब आपका डेटा आएगा, आपके टाइटल्स आएंगे, आप उसमें से सिलेक्ट करोगे, राइट? आप उसमें से कुछ देखना है. मैं ये रन कर रहा हूँ. ये देखिए पेपर खुल गया आपका, राइट? ये पेपर पूरा देख सकते हैं आप. फिर टेट्राजोल पे क्लिक करेंगे, वापस चला गया वो. तो आप ध्यान दीजिए, जो पेपर्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे खुल जाएंगे Zotero में. Yes, sir. तो Zotero आपकी मेन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम. एक पार्ट ये हो गया. दूसरा पार्ट क्या है आपका, कि आप जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जब लेटर से मैं अभी सर्च करने के लिए मैं पबमेड पे जा रहा हूँ, साइंस डायरेक्ट पे नहीं जाता हूँ, पबमेड पे गया मैं. ठीक है, पबमेड पे गया. ये एक और दूसरा सर्च इंजन है, ये आपको मालूम है. ओके, यहाँ पर मैंने टेट्राजोल डाला. ओके, एंड वी आर सर्चिंग. और लेटर से ये वाला जो फर्स्ट आया पेपर वो मुझे चाहिए कहाँ पर, मेरे डेटाबेस में. ओके, मेरा डेटाबेस मैंने किससे तैयार किया था? साइंस डायरेक्ट से, इजंट इट? Yes, sir. हाँ, और अभी मुझे ये डेटाबेस कहाँ से लिया है मैंने, ये पेपर कहाँ से लिया है? पबमेड से. इट इज अनदर सोर्स. लेट अस से दिस पेपर इज नॉट अवेलेबल इन माय डेटाबेस, और मुझे यही एक पेपर लग रहा है बस. ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा. लेट अस से 2 पेपर सिलेक्ट कर लिए, और मैं यहाँ पर टॉप पर जाऊंगा मेरे इंटरनेट पे, और यहाँ पर देखो आपको, मैं जब मेरा एक माउस यहाँ कर्सर लेकर आता हूँ तो एक विंडो होती है, सेव टू Zotero आ रहा है, देखो. Yes, sir. हाँ, तो ये जो आपने कनेक्टर डाउनलोड किया ना, वो कनेक्टर यहाँ पर आता है. तो एक पार्ट होता है सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हो गई सिस्टम में, राइट? और दूसरा पार्ट क्या है कि इंटरनेट पेज से अगर आपको डेटा वहां भेजना है, तो मैंने क्या किया था,
एक RIS फाइल बनाई थी बिबटेक्स वाली टेक्स्ट फाइल। आर यू गेटिंग? Yes, sir. वो पुराना डिस्कशन हमने साइंस डायरेक्ट से पेजेस सिलेक्ट किए थे, पेपर सिलेक्ट किए थे, 100 पेपर सिलेक्ट किए थे, एक्सपोर्ट कर लिया Text था file और RIS फाइल file. थी। हाँ, फिर उसको हमने बिबटेक्स फॉर्मेट से उसको इंपोर्ट करा तो हमारे जोटेरो में आ गए थे वो पेपर्स, ये पूरे 100 Yes, पेपर आ गए थे ना। तो वो मैंने एक टेक्स्ट की फाइल बना के वहां से लिए थे, राइट। अभी एक पेपर के वास्ते टेक्स्ट फाइल नहीं बनाना है हमको, ये 1-2 पेपर के लिए, तो हमने उसको डायरेक्टली सिलेक्ट किया और वो जो आपने कनेक्टर इंस्टॉल किया ना, सेकंड वाला इंस्टॉलेशन, वो कनेक्टर इंस्टॉल करने से यहाँ पर आपको एक ये आइकन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा ये दोनों को ऐड करना है क्या। देखो जोटेरो आइटम सिलेक्टर है वो, और ये 2 आपके पेजेस यहाँ पर आ गए, ये 2 पेपर सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर आप ओके बोलोगे तो ये 2 पेपर वहां पहुंच जाएंगे, कहाँ पर? direct to मेन डेटाबेस। Zotero. हाँ, तो वो 100 रेफरेंसेस की जगह वो कितने हो जाएंगे? 102 हो जाएंगे अब, क्योंकि आप 2 नए ऐड कर रहे हो, ये दोनों। आर गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. तो आपका जो ये है, आई विल गो टू दिस पार्ट, द प्रेजेंटेशन पार्ट, कि हम जब जोटेरो इंस्टॉल करने जाते हैं तो हमसे जो पूछता है इंस्टॉलेशन के लिए ये मेन प्रोग्राम है, ये हमारा पूरा डेटाबेस मैनेज करेगा, इंसर्ट साइटेशन करेगा, सब कुछ काम करेगा। पूरा काम हम इससे करते हैं, किससे? Zotero 7 फॉर विंडोज से करते हैं, राइट। और ये देखो यहाँ पे इंटरनेट का एज का बना हुआ आइकन Yes, sir. और प्लस साइन है। तो ये एक छोटी सी यूटिलिटी है कि आप जब इंटरनेट पेज पे सर्च कर रहे हो और आपको कोई पेपर दिखता है तो उस पेपर को आप चूज करके इस कनेक्टर की हेल्प से आप कहाँ भेज सकते हो? यहाँ भेज सकते हो। समझ में आया? Yes, sir. Sir, in case we are using Chrome, then क्रोम अगर आपके पास है तो अभी कैसा है कि हम अपग्रेड कर ही सकते हैं, तो यू कैन इंस्टॉल एज, गूगल ऐप में से जाके ऐड, हाँ क्रोम आप इंस्टॉल कर लो, बिकॉज जोटेरो कनेक्टर इज अवेलेबल फॉर एज ओनली, राइट। Since they are not Yes. providing for Chrome, so we have to adjust as per the availability, right? और सबसे इम्पोर्टेंट है ओपन सोर्स है, ये फ्री है और इसके अंदर कोई लॉगिन आपको बनाना नहीं है। इफ यू रिमेंबर, या आपने कभी देखा है तो मेंडले, अगर आपको देखेंगे मेंडले, तो Yes, उसका sir, पूरा जो Mendeley है will तो लॉगिन करके उसका अकाउंट होता है, हर बार लॉगिन करना है, राइट। और उसके बाद ही आप अपने जो पूरा रिसोर्सेस हैं आप उसको एक्सेस कर पाते हो, बिकॉज most of the data is available on the cloud as far as Mendeley is concerned. तो Mendeley का डेटा क्लाउड पर होता है, राइट, मगर जोटेरो का डेटा हमारे पास होता है, we have the data. So that is very important part of it, कि हमारे पास पूरा फ्रीडम है और हमको कोई लॉगिन नहीं करना। एक बार आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दी है, आप डाउनलोड कर लो, फ्री है, no charges are there. Working with it is not very difficult. There are few options which can be easily used. और आपकी टूल बार भी बहुत टिपिकल नहीं है जोटेरो की। हम अगर किसी वर्ड की फाइल में जाएंगे तो यू कैन सी दैट, जस्ट अ सेकंड, वर्ड वी हैव अवेलेबल वर्ड, फाइन, यस, ठीक है। आप कुछ भी टाइप करिए और बता देता हूं मैं, लेटर से मैंने कुछ रैंडम वर्ड डाला है, हाउ आर यू, नॉट अ वेरी गुड example of giving the citation, but ठीक है, how are you is there, then I'm choosing Zotero, right, and मुझे क्या करना है, ऐड करना है टेक्स्ट citations, right। तो ये बॉक्स आ गया है सिर्फ इस पे क्लिक करने से, राइट। बट बिफोर दैट डूइंग दैट आई विल फर्स्ट विजिट माय Zotero, राइट। और लेट अस से मैंने ये एक साथ मुझे ये इतने सारे citations लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि tetrazoles are very effective in controlling the growth of cancer cells. A general statement is there which will be available in so many papers. So that is why I have taken more number of papers here, ठीक है। तो Zotero में मैंने ये इतने सारे टाइटल सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट टाइप कर दी है, वो टाइटल सिलेक्टेड है, आपको ये याद रखना है सिलेक्टेड टाइटल्स हैं। अब मैं यहाँ पर आऊँगा ऐड
क्लिक किया, ठीक है, और ये आप मैंने शिफ्ट दबा के रखा है और मैं डाउन एरो दबा रहा हूँ, तो मैंने जितने टाइटल सिलेक्ट किए थे वो यहाँ दिख रहे हैं, मैंने सबको एक साथ हाईलाइट कर दिया यहाँ पर भी, और एक बार क्लिक करूँगा तो आप देखो ये सब आ गए। कहाँ पर आ गए? इधर बॉक्स में दिख रहे हैं आपको, Yes, sir. ओनी एट ऑल एंड ऑल दैट। हाँ, अभी मैंने बस ये लास्ट वाली एरो पे क्लिक करना है और आप देखोगे कि ये ऑथर्स के नाम के साथ साइटेशन आया है, स्टाइल, बिकॉज स्टाइल इज डिफरेंट, राइट। अब मैं स्टाइल को चेंज करना है, मुझे नंबर्स में चाहिए साइटेशन, तो प्रेफरेंसेस पे जाएंगे, राइट, और मैं ले लेता हूँ नेचर अगेन एंड देन आई विल क्लिक ओके। सी इट हैज बिकम 1 to 7, राइट। सो ये इतना इजीली हो जाता है। एंड इफ यू वांट टू ऐड बिब्लियोग्राफी, so you will type, let us say it is the end last part of your paper, so you have added the reference, now add bibliography। एक क्लिक किया आपने सिर्फ, ये 1 से 7 जितने थे वो सब वहां से रिट्रीव हो गए हैं और यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में आ गए हैं। यू कैन सी द लास्ट नंबर इज 7 हियर, राइट। तो इतना इजीली हम इंसर्ट कर सकते हैं साइटेशन हमारे और चेंज कर सकते हैं स्टाइल्स को। Let us say I want the style to be changed to IEE, IEEE, or okay. See, it has changed the style again. तो एक एक क्लिक के ऊपर काम होता है एंड ये इस टाइप का उनका साइटेशन का जो भी स्टाइल है वैसा वो दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप दैट you will try to work, install it, and write some nice reviews in future, and complete your PhD thesis also with the help of this application program. And hopefully your guides will be very happy with your efficiency and the time limit which you will be completing all the work, because you will be getting automated application और आपका बहुत सारा काम 2-2, 3-3 क्लिक पे हो जाएगा hopefully, ठीक है। Any more question? Sir, can you please show once again how to insert the references after citations? How to insert it with that one click? Can you just show it once? Change the style? You want me to change the style or? No, sir. Can you just cancel these references and just show it how you got Okay, inserted? okay, fine. Control Z. We are doing fine. Text is there only, right? अभी मुझे citation करने हैं। फाइन, सेंटेंस मैंने लिखा है, ओके। और मुझे अब यहाँ पर एंड में मुझे क्या चाहिए, कुछ साइटेशंस या रेफरेंस पेपर्स को ऐड करना है, साइट करना है। तो जोटेरो पे आप जाएंगे, आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस पेपर के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, आपने वो पेपर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेट अस से आफ्टर दैट सेंटेंस मुझे 3 पेपर्स को साइट करना है। आई एम क्लियर? हेलो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जोटेरो में सिलेक्ट हो गया डेटाबेस में से, राइट। हम कहाँ जाएंगे, वर्ड में जाएंगे वापस, और ये जो ऊपर सब है आपके जो पैनल, उसमें से जोटेरो का पैनल ओपन करेंगे, क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ है तो दिखाई देगा आपको, राइट। अब जोटेरो का पैनल, इसमें से आप पहला जो है ऐड लिखिए, आप पहला जो पार्ट है ऐड एडिट साइटेशन, मैं इसको, दिख रहा है आपको ये ऐड एडिट और साइटेशन, ओके। इस पे जब आप क्लिक करते हो तो एक बॉक्स आ जाता है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, आप ब्रैकेट में लिखा है साइटेशन, दिखा है साइटेशन? Yes, sir. हाँ, अभी वहाँ पे साइटेशन ऐड नहीं हुए हैं, मगर हमने जो सिलेक्ट किए थे वो यहाँ नीचे दिख रहे हैं। तो आपने पहला वाला हाईलाइटेड है, शिफ्ट दबानी है, शिफ्ट बटन, और डाउन एरो दबाना है। सेकंड वाला सिलेक्ट हो गया, फिर शिफ्ट दबा के ही रखना है, और थर्ड वाला भी मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये 3 वही दिख रहे हैं जो मैंने वहां पे चूज किए थे। अगर मैं आपको बताऊं वहां जाके, यहाँ पे जोटेरो में, जस्ट अ सेकंड, ओके।
बैक स्पेस, फाइन। आप ध्यान देंगे अगर ये 3 टाइटल पे, तो देखिए फर्स्ट टाइटल शुरू हो रहा है एडवांसेस से, दूसरा नाइट्रोजन से और तीसरा डिस्कवरी से। ठीक है, तो ये 3 सिलेक्टेड है, एडवांसेस, नाइट्रोजन, डिस्कवरी। जब मैं इधर आके इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आप ये जो लिस्ट आ रही है इसमें पहला वाला एडवांसेस है, दूसरा नाइट्रोजन है से शुरू हो रहा है और तीसरा डिस्कवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो वो हाईलाइटेड वहां रहेगा ना, तो आपको यहाँ दिखाई देगा और आप उसको क्या कर सकते हैं, लिस्ट को पहला सिलेक्टेड रहेगा, बाकी सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबाकर आप डाउन एरो दबाते जाओगे। ठीक है, एक बार सिलेक्ट हो गया तो आप इसी हाईलाइटेड पार्ट पे जो सिलेक्ट हुआ पार्ट है उसमें कहीं पर भी क्लिक कर दो, वो तीनों वहां पहुंच जाएंगे बॉक्स के अंदर। अब वो बॉक्स के अंदर आ गए, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। यस सर। और इसके बाद आपको जस्ट ये एक लास्ट वाली जो एरो है इसी बॉक्स में, उसको क्लिक करना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। एक बार सब आपके एडिशन हो गए साइटेशन के, तो हम लास्ट में क्या करते हैं, उनकी लिस्ट तैयार करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस लिस्ट, राइट। तो रेफरेंस टाइप कर दिया, कर्सर लास्ट में है, तो अब सेकंड ऑप्शन यूज करना है, ऐड और एडिट बिब्लियोग्राफी। बस आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी साइटेशन है वो 150 रहेंगे, तो पूरे 150 की नीचे आ जाएगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ, यस। हाँ सर, अगर हमें रेफरेंसिंग करना है और मैंने फर्स्ट रेफरेंस जोटेरो से दिया एंड सेकंड साइटेशन मैंने मेंडले से दिया, तो ऐसे भी चलता है? मेंडली और जोटेरो के डेटाबेस इंटरचेंजेबल हैं अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो। ओके, अगर आप जोटेरो के ऑप्शंस में देखेंगे, फाइल में, इंपोर्ट में, फाइल इंपोर्ट, तो यहाँ पर मेंडले रेफरेंस मैनेजर ऑनलाइन इंपोर्ट, ये ऑप्शन एक दिया हुआ है। यू हैव टू एक्सप्लोर इट फर्दर एंड देन यू यूज इट। ओके, सिंस आई वाज यूजिंग टेक्स्ट फाइल व्हिच आई जनरेटेड फ्रॉम द साइंस डायरेक्ट इटसेल्फ, तो मुझे साइंस डायरेक्ट से ही डायरेक्ट रेफरेंसेस लेना था, तो मैंने उसका एक एग्जांपल दिया यहाँ पर। अब मेंटली में अगर आपके पास है और आप अब जोटेरो में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो यू कैन चूज दिस ऑप्शन एंड लुक फॉर इट फर्दर, कि वो आपको कैसे हेल्प करता है। वो आपसे पूछेगा मेंडले का यूजर नेम एंड पासवर्ड, बस, फिर आप वहां से आपके 3-4 फोल्डर्स आपने बनाए होंगे अगर डेटाबेस के, तो कौन सा आपको फोल्डर उठा के लेना है यहाँ पर, तो वो शिफ्ट हो जाएगा मेंडले से यहाँ पर। But it is strongly recommended that you should not be mixing 2 reference managers together, at least for one single document. एक ही डॉक्यूमेंट में कुछ रेफरेंसेस आपने जोटेरो से डाले हैं और फिर कुछ आपने मेंडले से डाले हैं, तो जो साइटेशन है और जो नंबरिंग है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को कंफ्यूज करेगी। ठीक है, तो या तो आप पूरा डेटाबेस यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दो जोटेरो में और उसको यूज करो, एंड देन कंप्लीटली गिव अप मेंटली फॉर दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ठीक है, हाँ, और अगर आप इंडिपेंडेंटली आप काम कर सकते हैं दोनों के साथ। ओके, या Sir, एनी अदर क्वेरी? हाँ, sir, if we have saved paper, already downloaded paper is there in our PC. ऑलरेडी डाउनलोडेड पेपर है, हाँ, How to add? हाउ टू ऐड दैट पेपर? ऐड अटैचमेंट करके है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड अटैचमेंट का, तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकोगे, अटैच अ फाइल। एक बार आप फाइल अटैच करोगे ना, तो वो फाइल डेटाबेस में आएगी और यहाँ पर टाइटल में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। Okay, sir. ठीक है, हाँ, तो वो फाइल ऑप्शन में ही ऐड अटैचमेंट के तौर पर है, फाइल ऑप्शन में मिलेगा वो, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मोस्टली पीपल आर यूजिंग मेंडले क्या on this platform? Yes. The people who are present Yes, right sir. now here? Yes, sir. Okay. So then it is good that I could talk about another thing. Okay. If you don't have any more queries, then we would like to conclude the session. Yes, sir. Okay. Siraj sir?